Okay, if you are familiar with this channel, you know I have a friend called Manmesh, and he's a nice kid. He is one of my best friends for sure. और मैंने उसको बहुत बार प्रैंक भी किया, एक बार उसको किडनैप किया था, एक बार वो मतलब मिसिंग नहीं था, तभी भी मैंने पूरे इंटरनेट पे बता दिया था सबको कि मिसिंग है करके, लाइक, और उसका बहुत बड़ा सीन वगैरह बना दिया था. तो सो आई प्रैंक्ड हिम अ लॉट. तो आज मानवेश ने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे एक पोस्ट रिपोस्ट की थी जिसमें एक कार थी, वो बसेस से सराउंडेड थी और वहाँ पे बस पे एक जगह पे लिखा था लोनलीनेस, फेक फ्रेंड्स और आई डोंट नो, हार्ट ब्रेक, दिस. सो आई टेक्स्ट हिम, आई टोल्ड हिम दैट आई गॉट यू ब्रो, लाइक आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, लाइक यू कैन टेल मी एनीथिंग, आई लव यू एंड आई केयर अबाउट यू. तो ऐसे हम बातें कर रहे थे एंड आई सेंड हिम अ फोटो जिसमें मैंने लिखा था कि आई लव यू एंड हाउ मच आई केयर अबाउट यू. और उसके बाद मैंने वहाँ पे उधर लिखा था कि लाइक आई लाइक योर एज कीप वर्किंग. तो मतलब वो सब अफॉर्मेशन जो अच्छा लिखा था उसको बहुत अच्छा लगा, बट लाइक वो दो चीज़ें, आई लाइक योर एज कीप वर्किंग, आई डोंट नो, ही गॉट काइंड ऑफ रूड, उसने मेरे को फक यू बोला. सो आई सेड हे, आई एम नॉट अ गे, I'm straight, I can't fuck no boys. So he said that I'm straight too, I'm not gay. I was like, it's okay, it's okay to be gay, you know, like it's 2021, like nobody's judging you. You can be gay, you can be straight, you can be anything you want, right? Well, the secret is I know he is straight, but today I will annoy the fuck out of him and I will tell everybody that he is a gay, and I will tell to every single friend to call him and ask him about how he turned into gay. So yeah, that's today's video. So yeah, enjoy bitch. मैं बोल रहा हूँ कि देख, जैसे कि तू उसको कॉल कर और उसको बता कि यू आर अ लीडर ऑफ LGBT कम्युनिटी, और मतलब उसको बता कि कैसा लगता है, मतलब when did you find out you are gay and how what kind of problem you faced, or like ऐसी like. Okay, so I definitely know you don't understand what the fuck I was mumbling right there, but basically I was telling him to call Manvesh and tell him that he is a leader from LGBTQ community and ask him couple of awkward questions about how he faced the world and how he came out to know that he is a gay and the stuff that the people ask, like the community leader. I mean, I don't know. Okay, I just told him to ask and he did his work, and just like that I told like couple of other friends, and here was the result. I'm calling Manvesh right now. I'm calling Manvesh. Hello, is this Mr. Manvesh speaking? Hello, is this Mr. Manvesh? Sir, congratulations, sir. I'm speaking from the international LGBT community, and I would like to have a small conversation with you if you're free. Yes. So first of all, very very thank you that you came out and announced that you are the part of LGBT community. It is one of the most respected community out there, and I would like to ask some question to you if you agree. Yes, you can. Okay, sir. Sir, first of all, how do you feel to be a gay, sir? I would like to ask this question. Sir, will you please use a proper language to speak, because this call is recorded and we are choosing you as the leader of Nagpur LGBT community, and please bro, sir, please be a little formal with me. Excuse me, sir. Is this Mr. Manvesh or I'm talking to someone else? Because I'm not Ashish, sir. I'm really sorry. I'm Pratik, and I should really check your name because I don't think you're Manvesh. Sorry for the call, sir. Really sorry. Fuck off, everyone. हाँ ठीक है. क्योंकि मैंने अभी कॉल ये बोल ही रहा था कि शायद मैं मानवेश से बात नहीं कर रहा हूँ. अच्छा, ठीक है. अभी और एक बार कॉल करता हूँ. ठीक है. We are here to talk with Mr. Manvesh because we have chosen him as the leader of Nagpur LGBT community, and one of his friend Samyak talked us about him and told him that he have came out to be
the part of LGBT community, and we would like to celebrate this. He smoked weed, got high, and gone to the terrace and jumped from there, and he just died. We are at his funeral, so talk to you later. And just like that, billions of people call him. I mean literally billions of people. And that kid was so honored that he had to literally come to my house and beat the shit out of me. Well, मैं वो part नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि obviously this prank is not about me, this prank is about Manvesh. But before, I will show you one clip in which he's been annoyed and cussing the fuck out of my friends. So yeah, here it is. Hello? Hello. Am I talking to Manvesh? No? Actually मुझे आपका नंबर मिला था. जिसने दिया उसके गांड में गोली मारा. सॉरी. हेलो. जिसने दिया उसके गांड में गोली मारो. आर यू मानवेश? नो. ओके, तो मैंने आपके बारे में सुना था कि मतलब मानवेश के बारे में सुना था कि वो अपने जैसे किसी को ढूंढ रहे थे, वो बहुत लोनली फील कर रहे हैं एंड ऑल एंड ऑल. सो आई वाज आस्किंग फॉर अ डेट इफ वी कैन. समझ रहे हो ना? अच्छा सुन भाई, अब कॉल किया ना तो एक गाड़ी में छतरी वालों का और खोल दूंगा, समझा? ये मानवेश का नंबर नहीं है एक्चुअली, मैं बता रहा. ओके. हेलो. मैं भाई तो भाई छतरी पे डालने की बात. मेरे को बहुत हंसी आ रही थी. मेरे को लग रहा मेरा नहीं तेरा गेम नहीं हुआ. मैं बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकता था. मैंने बोला मतलब अभी उनको जानते नहीं, इसलिए पोलाइट में मैं बोलता हूँ करके इटालियन नहीं देखता हूँ, है कि? हाँ सही बात है ना.